Unfortunate news coming in from Uttarakhand in a major mishap. A portion of an under-construction tunnel of the centre's ambitious Char Dham all-weather highway project collapsed in the stretch between the Silkyara-Polgaon villages in Uttarakshi district of Uttarakhand. The incident happened when work was going on in the tunnel. At least 40 labourers are feared trapped inside due to the collapse. Rescue operations are underway. There are about 160 rescue personnel of both the NDRF and the SDRF who are present on the spot. As per rescue officials present on the spot, the trapped workers are safe. Communication has been established with them via walkie-talkies, and oxygen as well as water are being supplied via a pipeline. Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami is slated to visit the spot and take a stock of the situation very soon. But joining us on the broadcast is my colleague Praveen Kumar. Praveen, can you take us through the details of what's happening on ground at this point? देखिए, ग्राउंड पे अभी थोड़ी देर के बाद यानी 11:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अधिकारियों से और निरीक्षण करेंगे। लेकिन जो ये पूरा टनल है, तकरीबन 2800 मीटर अंदर जो लेबर काम कर रहे थे और जो एंट्री पॉइंट है तकरीबन 200 मीटर के अंदर जो है 60 मीटर का जो पोर्शन है वो ऊपर से गिर गया। ये जो कच्ची दीवार and Praveen, just 1 second. As we are speaking, we can see visuals, in fact, of the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. He has reached the spot. These are live visuals on air for all of our viewers. Remember, viewers, rescue and relief operations are taking place. He's, of course, interacting with the officials who are present on the spot, taking a stock of the relief and rescue operations taking place. CM Dhami has reached the spot. He's, of course, reached the very area at which the tunnel collapse has taken place. You can, of course, see workers in and around. He is being briefed, in fact, by the senior officials in the area. CM Dhami, of course, interacting with the officials, listening to them, listening to the updates, taking an update as far as what is the situation like on ground. He is present at the spot. Praveen Kumar still with us live. Praveen, what can you tell us about this visit? We are seeing live visuals on air at this point. देखिए, मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं वहां पर और निश्चित तौर पर जो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कल से मुख्यमंत्री लगातार जो किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है उस पर बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने बताया किस तरह की स्थिति वहां पर है, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी तुरंत भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। और अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, अधिकारियों की टीम है, आपदा सचिव उनके साथ मौजूद है और जो तमाम जो जिलाधिकारी मौजूद है, एसपी मौजूद है, एसएसपी मौजूद है, वहां पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लोग वहां पे जवान मौजूद हैं और वहां पे मुआयना कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, जानकारी ले रहे हैं। कल तकरीबन 15 से 20 मीटर का मलबा हटाया गया है और जो दिक्कत ये आ रही कि ऊपर से जैसे ही मलबा हटता है ऊपर से फिर से भरभरा कर मलबा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। एक पोर्शन बनाने की कोशिश हो रही है, साइड से पोर्शन बनाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से वहां निकाला जाए, वहां पे लोगों को निकाला जाए साइड में एक बाईपास बनाकर। और ये कहा जा रहा है कि शाम तक कुछ न कुछ अपडेट जरूर आएगा कि वहां तक कहां तक हम पहुंचे हैं। शाम तक कहा जा रहा है कि निकाल सकते हैं, लेकिन मलबे जो बार बार आ रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कल से ही जो आपदा कंट्रोल रूम जो सचिवालय में है, कल वहां पर तमाम अधिकारी बैठे हुए थे, वहां का मुआयना कर रहे थे, जो वहां से जो डायरेक्ट लाइव जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री भी देख रहे थे चीजों को, अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देशित कर रहे थे कि किसी तरह की दिक्कत न हो। जम्मू कश्मीर से एक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है, एलएनटी कंपनी से भी मशीन मंगाई गई है ताकि मलबा तुरंत से हटाया जा सके। सीएसडीसी से भी जो ड्रिलिंग मशीन जो कि टनल में काम करते हैं और वहां से मलबा हटाया जाता है वो मंगाए गए हैं। जल निगम से भी बात की गई है, उनके भी लोग वहां पर पहुंचे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक्सपर्ट टीम वहां पहुंच रही है, जिसमें वाडिया के होंगे एक्सपर्ट, रिस्क मैनेजमेंट जो इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं वो उसके टीम के लोग होंगे और वो देखेंगे कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है। टनल में इससे पहले भी चमोली में घटना हुई थी और उस वक्त भी काफी मजदूर हताहत हुए थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। कल जो प्राथमिक रूप से ये काम किया गया कि पाइप डाली गई
हालांकि जो हमारी आपदा सचिव से बात हुई इंडिया न्यूज पर, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि अभी 6-7 दिन का ऑक्सीजन अंदर में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो जो पाइप डाली गई उससे वॉकी टॉकी भेजा गया और उनसे बातचीत की गई। तो मजदूरों ने बताया कि वो लोग ठीक है, लेकिन उन्होंने खाने के पैकेट्स मांगे थे, खाना और पानी के अंदर दिक्कत थी, तो ये दोनों पाइप के द्वारा भिजवा दिया गया है। वहां पे बातचीत उनकी हो रही है आपस में, और एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो इसके लिए एक अतिरिक्त पाइप भी बिछाया गया है ड्रिल करके, और वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी जल्दी सभी जो लोग फंसे हुए, जो जान 40 लोगों की अटकी हुई है, उनको बाहर निकाला जाए और किसी भी तरह से सुरक्षित जगह पे उनको लाया जाए, पैसेज बनाया जाए। अगर पूरा मलबा ना भी हटे, तो हमारी बातचीत हो रही थी कैसे होगा जब मलबा ऊपर से गिर रहा है बार बार। तो जो आपदा सचिव ने बताया कि हमारी कोशिश ये कि पूरा मलबा अगर ना भी हटे तो साइड से कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि वहां पर रोकने के लिए कि वहां मलबा ना है, और एक एक करके हम धीरे से सभी जो मजदूर हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर ले आए। तो यही कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री कल से चिंतित थे, दीपावली का दिन था, निश्चित तौर पर जो 40 मजदूर वहां फंसे हैं उनके घर में मातम पसरा होगा कि क्या होगी क्या नहीं होगी, तो दीपावली नहीं मना होगा। तो कोशिश यही है, जो जितने प्रशासन के लोग हैं निश्चित तौर पर वो भी अपने घर दीपावली नहीं मनाए, कल से लगातार वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सबकी कोशिश यही है कि सभी लोग, सभी जो मजदूर हैं, जो भी कर्मचारी है वहां पे, वो बाहर निकले सुरक्षित। प्राथमिक कोशिश यही है जी। Indeed, and also joining us on the broadcast are two very special guests, Mr. Naveen Bhatnagar, who is the former DIG of the NDRF, as well as Mr. Dibayan Das, who is a civil engineer. I'd like to go to Mr. Das first. Sir, this sort of incident is it's not the first time that this has taken place in Uttarakhand. My colleague was just telling that one had taken place in Chamoli a while back. The soil is a little loose over there. They have faced issues with their soil earlier. There was a town that was also sinking a couple of months back. It was in the news, Joshimath, and now this tunnel collapse has taken place. What in your assessment could be a plausible reason behind this? Basically, as a civil engineer, I had known 3 types of failures, just like it happened in Calcutta also, the same thing while constructing the metro railway in Calcutta. I believe the same kind of failure happened here also, that is geological failure, because I don't feel our engineers are that incapable for the structural failure. Basically, there are 3 types of failure: structural, failures due to water pressure, and geological failures. So I believe while digging the tunnel, it came to a part where the soil failed. As you said, the soil was loose. Indeed, sir. It seems as if the Chief Minister of Uttarakhand is speaking to the media. Let's listen in as what has he engaged in this situation. I'll come back to you. साहब, गंभीरता को देखते हुए आपको यहाँ आना पड़ा, क्या देखा आपने मौके पे? देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है, और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है, और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है
हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुँचा है, क्या अभी कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा, चूँकि ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है, वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी है? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। All right, there of course we've heard the Chief Minister of Uttarakhand stating that the Prime Minister has also taken stock of the situation. He stated that different agencies are working in tandem, and the first priority of course is to rescue the stranded people. Communication has been established. Meanwhile, he has highlighted one of the key difficulties that is being faced, that is the debris which is falling as the rubble is being removed. And I'd like to bring back Mr. Das into this discussion once again. You would also mentioned loose soil when you were making your point, and this only seems to sort of supplement the point that you were making. Back to you. Yeah, I believe that this is a geological failure since muck is being removed. I have heard from your reporters, Mr. Praveen Kumar, and I believe that they can this kind of failures can happen. This is totally normal for civil engineers like us, but but it's very saddening for me too to see all these workers inside trapped. Indeed, and there is work that is still going on. Yes. So what do you think are what can be done in your perspective so that to ease this problem of the rubble consistently falling down? In my perspective, in case of geological failures, tests should be done every now and then. Usually what happens in government projects is the test is done 2 to 3 months back or a year back. Within that time period, a lot of things change. So I believe that tests should be done every time, and between very small periods of time, to avoid these kind of issues in the future. All right, and I'd also like to rope in Mr. Naveen Bhatnagar, who's been waiting rather patiently with us. Sir, we've just heard Chief Minister Dhami state that all agencies of the state and of the centre also, those which are involved, they're working in tandem in order to rescue the people. That is their first priority. How crucial do you think are the initial few hours and especially collaboration between different agencies during this time in order to ensure as many lives as possible are saved? Yeah, definitely. So there are 40 people stuck there. So no problem. The people, we are able to supply the food as well as the oxygen and water also. So their survival chances are more, and more efforts are being made by our teams as well as the National Highway Authority people also. The escape route. Thus, also they are planning to evacuate these people through some escape the route. I don't know that in what way they will do, but there are so many techniques that they can adopt it, and definitely they will adopt it, and that technique is there with them, and they will rescue all the people safely, as far as my information is concerned. So it's a good news that we have made the communication also with them, and we can get the latest update from their from that tunnel, that how dangerous this thing and how the debris are coming down, and how we can save them, and what initial activities we can do it, and what instruments or the techniques we can use and we will use
So it's depend upon the situation of that particular tunnel, which we are getting regularly with the communication of the people stuck there. So they are giving the information, they were given the proper oxygen, food, water. So there is a 100% chances for the safe rescue of the people, as far as my concern or as far as my experience is there. Yeah. Indeed, sir, you mentioned about information flow. How crucial do you think, in your experience also, how crucial is information flow to ensure the success rate of these operations? Because we have already communication with them, and the real situation we are getting from the tunnel inside, that how much requirement is there, how much is there any chances for the escape route, is there any chances for another hole which we can do it. But since as our friend structural engineer told, that the geological systems and these rocks are sandy rocks, so we can't predict 100% that what will be the situation. But it's a good thing that all the people are safe, and our scientists are there. Their teams are there from Roorkee and other places also approach there, and they are making this some standby arrangements, and they will use the new techniques also to rescue them. Yeah. Indeed, and I'd like to also, give a comprehensive picture to our viewers. There are visuals that had in fact emerged of how the tunnel looked like yesterday before this rather unfortunate incident of collapse had taken place. This is in fact a part of a larger project in order to ensure seamless connectivity in the hilly terrain. And right here on my screen you can see I have a map opened. This of course showcases the entire area, that will connect Dharasu with Barkot in the north. This is of course in Uttarakhand district of Uttarakhand. This is a road that meanders quite a bit, and this area in particular, the one where Manjgaon, Nagal, Gehoti and Ruddy Top are there. This is the area in particular in which the road meanders quite a bit due to the terrain, and this particular incident of the tunnel collapse has taken place at Ruddy Top. This is of course one image that I want to showcase, but apart from this there are other images also. Yes, right here this is a satellite image. You can see that this where I am pointing to right now is Ruddy Top. This is where exactly the collapse had taken place. You can see in fact the tunnel project site office is located towards the bottom, and right at the top is the tunnel's north portal. This is the site where the collapse had in fact taken place, and I'd like to zoom in fact further and present an even more comprehensive look at what exactly is taking place. This is the Barkot Silkyara Tunnel North Portal. You can see this is a view, a satellite image from the top. You can see the construction that is taking place as far as this tunnel is concerned. There are of course excavators and machines that line the entire route over here. This is of course a 4-kilometer tunnel that is being built, and a 150-meter stretch had in fact collapsed yesterday itself. And let's also take a look at the collapse visuals itself. Visuals like these are of course emerging. This has been taken from the view of the tunnel itself. And right here on your screens you can also see of course the Barkot Silkyara Tunnel North Portal. As I have been mentioning earlier, this is the very site at which the tunnel collapse had taken place. This is of course a National Highways and Infrastructure Development Corporation's project bid to enhance connectivity in the region, ensure seamless travel for people, especially pilgrims who are undertaking the Char Dham Yatra in the state of Uttarakhand.
But this is not all. Now this picture is very interesting. Right here you can see the entrance to the tunnel towards the, I beg your pardon, I'll go back to the image right there. Yes, right here you can see to the right of the screen is the tunnel. This is of course the entrance to the tunnel. It's also mentioned the tunnel project at Barcourt. And incidentally, right next to the tunnel is a first aid depot. So this is an emergency depot. It's a site office right next to the entrance of the tunnel. There are a list of safety site notices that have been placed, emergency contact numbers, first aid of course that can be provided. But apart from this, a view from inside the tunnel where yesterday itself construction was taking place. This is one of the pictures that was in fact clicked yesterday. Construction underway, full throttle, and this is another view from outside the tunnel. You can take a peek at the tunnel right over here. This is the entrance to the tunnel that I was showcasing. Right here is that little first aid office also that I was highlighting earlier. We had of course seen a zoomed in version of the same. This highlights the route. It goes to Gangotri, Uttarakshi and Dharasu Bend of course. This is yet another image. This is the entrance of the tunnel. The same yellow pipe that we had seen earlier, the office, construction work taking place. But that is not all. This is of course another front view of the tunnel itself. You can see that the construction work is underway. This little office right here is the same first aid post that I was highlighting earlier. So these are of course images of the tunnel as well as a comprehensive picture of what it is like on ground. But meanwhile, my colleague Praveen Kumar is still with us on the broadcast. Praveen, what other updates are we getting at the moment? देखिए, एक अभी जो मुख्यमंत्री ने बताया कि एक रणनीतिक बात बताई उन्होंने कि ह्यूम पाइप हरिद्वार से मंगवाई जा रही है, यानी कि जो बड़ी पाइप होती है उसको डाला जा रहा है। अगर मलबा ऊपर से आता रहा तो पाइप के अंदर से मजदूर को निकाला जाए, ये भी कोशिश चल रही है, एक रणनीति का हिस्सा है। एक तो बाईपास की बगल से कहीं से इसे रोक दिया जाए ताकि वहां मलबा गिरे भी तो उधर से निकाल लिया जाए, या फिर ह्यूम पाइप डाल के वहां पर अगर ज्यादा मलबा आता रहा तो ह्यूम पाइप डाल के फिर पाइप के अंदर से मजदूर को बाहर निकाला जाए। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। अभी एक्सपर्ट टीम वहां पर लगातार देख रही है कि किस तरह से हमें निकालना है, तो वैकल्पिक तमाम व्यवस्था की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये उत्तरकाशी का जो पूरा इलाका है, ये चार धाम यात्रा यहीं से गुजरती है और जो ऑल वेदर रोड है उसके तहत इस सड़क को बनाया जा रहा था। और जिस तरह की घटना हुई है, ये जो ऐसी जगह पे हुई जहां ये पूरा जो पहाड़ है, इसको समझने की जरूरत है। भुरभुरा पहाड़ है, मिट्टी का पहाड़ है। बहुत ज्यादा उत्तराखंड में सॉलिड पहाड़ आपको नहीं मिलेंगे, जो चट्टानों वाले पहाड़ नहीं मिलेंगे, तो इस तरह की दिक्कत होती है। और मलबा जो आ रहा है उसमें पानी भी आ रहा है मलबे के साथ, तो गीला मलबा आ रहा है, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है। और डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर भी ये मलबा फैल जाए, तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी जल्दी इस मलबा को हटाया जाए और मजदूरों को वहां से निकाला जाए। हालांकि 4-5 दिन के जो ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में अंदर में है, साथ ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी लोगों को निकाला जाए। ह्यूम पाइप हरिद्वार से मंगवाया गया, 4-5 घंटे में ह्यूम पाइप वहां पे पहुंच जाएगी। उसके बाद उसको भी अगर वो जरूरत पड़ी तो उसका भी उपयोग होगा वहां पे। Indeed, and I'd like to rope in Mr. Bhatnagar back into the discussion. We are constantly flashing a helpline number on our screens for our viewers. This is of course to ensure that people get access to, perhaps if their loved ones are in fact stuck inside. So please note the number. But back to Mr. Bhatnagar, it seems as if work is of course taking place at an exponential pace. We have live visuals that we're showing our viewers. There's a lot of mobilization, even as my colleague was highlighting, construction equipment as well as rescue equipment in particular. It's being mobilized over there in order to rescue these workers. So are you optimistic of the chances that we will rescue the people who are stranded in there? Yeah, definitely. I have experience about it, so no problem to me. We will achieve the target, and we will certainly all the people will be rescued safely
because all the symptoms are as per our choice, whims and fancies. So whatever we want, the already symptom is there, situation is there, and we are able to have communication, food and oxygen and all these things, and also the communication, so that we can get the latest information what is there inside where they have been stuck. So we are also trying to get a safer place and a second place also to find out, as the human pipe will be approaching there shortly. So with the help of that pipe, we can definitely have a great thing to rescue them. So no problem. All the efforts are there, and our SDRF, NDRF, and experts are there from the National Highway Authority and the safety people. All are camping there, especially the CM also. So definitely, I am sure that with this effort, we will achieve the target. So need not to worry. All the people who are watching this session, I assure that everybody will be safer and will be taken out safely from there. Yeah. Indeed, and last word to Mr. Das before we wrap up this discussion. Sir, you've said that tests need to be done frequently. My colleague was once again highlighting how the soil in Uttarakhand is rather loose. It's not the kind of soil that you will find in other hilly terrain. This is different. So do you think this will serve as an example, a sort of warning for future? Yes, I believe this should be a warning for the future, because these kind of things can't be repeated. Lives are more important, I believe, and I believe that these tests should be done repeatedly, even if they have been approved a year ago or 2 years ago. But it should be done on a regular basis, even if the last test was okay. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.